but still somehow मेरे experience में I was not satisfied. और ब्रीदिंग से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है. And then figuring out a way how to do it. This is one of the learnings I have. A safe career, as you know, घर वालों का हमेशा यही होता है, हमारे माइंड के अंदर ग्रूम करा जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है सारी जिंदगी नौकरी करने के लिए. एंड व्हेन दैट प्रेशर कम स्टार्ट्स इन क्लास 10th, चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, उनको दबा देते हैं. बहुत हो गया. तो अगर आप वो 10-15 मिनट अपने लिए निकालोगे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुश हो सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल सकती है. हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें, लाइफ की डेफिनेशन के पीछे हम भागते रहते हैं, पर लाइफ का मीनिंग बहुत सिंपल है. और मैंने जो समझा है, 2 सांसें. ये 2 सांसों के बीच में हमारा जीवन है और यही लाइफ है. अगर ये बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो यही आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ब्रीदिंग से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और इसी से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हैं, सो हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं. और इसी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, खाना डाइजेशन होती है, वो भी ब्रीदिंग की वजह से हेल्प होती है. और इसी की वजह से आपका पीएच लेवल बॉडी का मेंटेन रहता है. तो इसके अनगिनत फायदे हैं. यही आज डिस्कस करने के लिए मैं अपने एक दोस्त से बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ. कल मैंने उसके साथ एक ब्रीदिंग सेशन किया था. तो ब्रेथ वर्क कराते हैं वो, और इसमें आपको कॉन्शियस माइंड जो अभी मेरे आसपास चल रहा है, जो मैं सोच सकता हूँ, एक्सेस कर पाता हूँ, उस दिमाग से सब कॉन्शियस दिमाग में झांकने की जो जर्नी है, मतलब अपने अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, उनको दबा देते हैं, और ब्रेन का वो अनटैप्ड पार्ट जिसको आप एक्सेस करने की कभी सोच ही नहीं सकते हो, ये उसमें आपकी हेल्प करता है. अंकुर एक्चुअली बहुत पुराने मित्र है मेरे. इनसे बॉम्बे में मेरी मुलाकात हुई थी. तब ये कॉर्पोरेट लॉ में काम कर रहे थे, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के साथ काम कर रहे थे तब. सो वेल सेटल्ड करियर, एंड सडनली ही डिसाइडेड टू क्विट इट ऑल. ही टुक द जर्नी ऑफ दिस न्यू लाइफ, राइट? जहाँ पे उन्होंने फिर ही केम अक्रॉस दिस ब्रीदिंग टेक्निक एंड he was able to access his mind in a way that he thought this was the meaning and calling for him in his life. तो आज मैं अंकुर के साथ वो एक्सपीरियंस जो कल मैंने किया, आज मैंने उसको अब्सॉर्ब करा. हम लोग अब शाम को ब्यूटीफुल वाइब इन साउथ गोवा, हम लोग पटनीम के पास में हैं. अब हम अंकुर के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंज लाया और कैसे उनको इस चीज़ की तरफ ज़िंदगी ने ला के खड़ा कर दिया और कैसे वो उसको मूवमेंट बना रहे हैं उनको धीरे धीरे. उनका एक इंस्टाग्राम पेज है, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप उनको कहीं मिलना चाहते हो, उनके साथ कोई सेशन अटेंड करना चाहते हो, तो वो कहाँ कर सकते हो. और वो ट्रैवल भी करते रहते हैं अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, उनके बूट कैंप्स होते हैं, तो यू कैन गो एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. बट आई थिंक इट्स अ जर्नी वर्थ एक्सपीरियंसिंग, बिकॉज हमारी स्पिरिचुअल साइड के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 9 से 5 की भागदौड़ में ना ये सब चीज़ें रह जाती हैं, और फिर धीरे धीरे वो जो लाइफ के दुख दर्द हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो इकट्ठी होती रहती हैं और फिर हमारे दिमाग के अंदर एक अलग सा प्रेशर क्रिएट करती हैं. स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से भर रहे हैं, एक उबाल सा आ जाता है. तो इनको रिलीव करना, रिलीज करना बहुत ज़रूरी है. तो यही आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अंकुर से. सो आई विल इनवाइट हिम एंड लेट्स हैव दिस चैट टुगेदर. So Ankur is here, or I'll ask Ankur to introduce himself also and tell us a little more about his journey so far. Hi Rahul. Wow, it's a unique experience. Yes. Alag hi, because I'm not used to speaking in front of the camera. But no, just a candid talk to me. Yes, have yes. a candid conversation. I know, but it's always the first time, Yeah. and this is what I've also been learning in my journey. Yes. To say yes to everything and then figuring out a way how to do it. Yeah. This is one of the learnings I have been on. So yeah, if I have to tell about the journey itself, I had a lot of fears, a lot of insecurities, a lot of unhappiness, in the sense that I was, जो मैं कर रहा था, मैं खुश नहीं था.
मतलब I thought I did all the things that I needed to do. जो मुझे बोला गया था कि अपना एजुकेशन पूरा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छा नौकरी मिलेगा, which was well paying in the city of dreams. So technically all the checklists were met, but still somehow मेरे experience में I was not satisfied, and a sense of monotonousness. I felt कि यार एक जिंदगी है, मैं इसी रिदम में लूप में चलते रहूंगा, और वो रिदम was not even enjoyable. I was like unhappy, and I did all the things that is considered cool. कमाओ और खर्चे करो और खर्च करो towards things which was not satisfying. Yeah, So I get you. a city life did not provide me that way to really be. It was a false sense of happiness. So I was doing all of that, but it came to a point where I said कि कुछ अलग करना चाहिए. बहुत हो गया. बहुत हो गया. So I left one day not knowing what I am going to do, or not really planned for it or saved for it, but completely lost. Had no idea what next, but it was a big decision. It could have gone horribly wrong, but I did that. So that was a big Risk. decision, a risk. But in hindsight, the most important decision is to jump into that well of not knowing how deep it is. Since then, I've been lucky. I managed to go and learn from some of the good teachers, masters that are around, and try to make gradually, Yeah. धीरे धीरे self lifestyle में, initially working with the body, working with the breath, working with the mind, छोटे छोटे lifestyle changes, or I started doing that, and I started feeling some, yeah, एक खुशी, एक I was joyful again. So then I continued. So, but I knew in a few months or in a little while कि मुझे this is what I enjoy, and I see I want to live this way. And वहीं से journey शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है. And in this process, coincidentally, I never intended to, but it just so happened that I came across a particular breathing technique, or we call it the breathing journey, where we use breath as a tool to connect to our deeper conscious, subconscious, and more within. And now I felt how it impacted me in my life in many levels, and I kind of continue doing this in holding space that people can experience this form of deep connection to themselves. And for now, this is how it's going. I don't know what will be in the future, but I feel I want to continue doing this. Yes. So, अंकुर मुझे बताओ कि जब आपने when you took the decision कि okay now I'm calling it quits, it was a big risk in life, right? So my first question to you would be that it's a big decision that you took, like calling a safe career as you know. घर वालों का हमेशा यही होता है, हमारे माइंड के अंदर ग्रूम करा जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है सारी जिंदगी नौकरी करने के लिए. एंड व्हेन दैट प्रेशर कम स्टार्ट्स इन क्लास 10th, पहले 10th फिर 12th, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी नया प्रेशर है, उसके बाद नौकरी ऑफ कोर्स इज अनदर थिंग. तो ये एक माइंडसेट है व्हिच इज वेरी टफ टू ब्रेक इन सम ऑफ द, like not everybody is meant to pursue their paths in life. I would not say meant, but we are not guided only. हमारे पास वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और रीच ही नहीं है अपने माइंड की उस पावर को उस तक पहुंचने का कि हम क्या अचीव कर सकते हैं लाइफ में, किस पाथ पर हमें जाना है. क्योंकि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब तो हमारे को बहुत सारी सोच आती है, बहुत ख्याल आते हैं, कुछ नई नई चीज़ों, कोई स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड होता है, कोई किताबों की तरफ इंक्लाइंड होता है, कोई साइंस की तरफ इंक्लाइंड होता है. पर फिर धीरे धीरे पेरेंट्स की एक आवाज़ आती है, फिर उसके बाद दोस्तों की एक आवाज़ आती है, फिर टीचर्स की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद पार्टनर की आवाज़ आती है, गर्लफ्रेंड की आवाज़ आती है, बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती है, और वो धीरे धीरे ना दबने लग जाती है. तो वी लूज आवर आइडेंटिटी, बट यू फाउंड इट आफ्टर मेनी ईयर्स. सो टेल मी अबाउट दैट जर्नी. व्हाट वाज दैट इमोशन लाइक बिफोर यू वर कॉलिंग इट क्विट्स, then you took a pause and then you again took new path in life. तो वो जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा बताओ. So I don't know if I would say that I found it, but it feels right for now. You were saying कि हमेशा हमें बताया गया है कि there is a bench, there's something we need to achieve or reach. Until the time we don't reach there or finish that milestone, we are not
इनफ। जो ऐसे आपने बताया कि 10th में इतने मार्क्स लोगे तो तुमको अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन होगा, 12th में अच्छा करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा कॉलेज से अच्छा जॉब मिलेगा, तब लगेगा कि आप पर लाइफ सेटल हो गया, अब शादी कर लो, तो तब तो एक स्टैगर्ड सिस्टम है। हाँ, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये 10 साल जो ऑथेंटिक और ट्रू नेचर होता है और जो जिसमें सही में खुशी मिलता है, हमको वो चॉइस ही नहीं मिलता कि हम उस पर वी कैन गो डीप और इवन आइडेंटिफाई कि क्या है। बट हमको ऑलरेडी प्री प्लान कर दिया गया है कि यही सिस्टम है और इसी में आपको चेकलिस्ट पूरा करते करते आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं पीपल आर फोर्स्ड एंड दे डू नॉट इवन गेट टू नो कि क्या है जो उनको असल में, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज मेंट टू बी अ लॉयर और इंजीनियर और डॉक्टर, और जो रियल एसेंस होता है यू गेट टू नो व्हेन यू आर इन योर बोर्न विद सर्टेन क्वालिटीज। मुझे कुछ टाइम पहले किसी ने बता रहा था, as in I met a friend 2 days back and she was saying that she knows of a person somewhere in Turkey that when he was a child he didn't have any attention. वो हमेशा कूदते फांदते रहता था, मूव करते रहता था, उसको they would tell him sit down, study, ये करो, तो उसमें एकदम ध्यान नहीं। तो उनको किसी वेस्टर्न डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने बता दिया कि इनको कोई ADHD या कुछ है और उनको कोई मेडिकेशन देना पड़ेगा। बट इवेंचुअली द पेरेंट्स वर रिसेप्टिव इनफ टू रियलाइज कि नहीं, मैं इतने छोटे बच्चे को अभी ये मेडिकेशन जो लाइफ लॉन्ग है नहीं, उस पर नहीं डालना चाहूंगा। इंस्टेड दे वेंट एंड रियलाइज एंड वेंट एंड स्पोक टू अ फ्यू पीपल एंड दे सेड दैट he has the quality of movement and he has excess energy and that can be channeled into something more physical bodily, and he went on to be one of the most famous choreographers in the world. Wow. So it's just that कि सबके एक quality होता है which is the true essence and everybody is born different. Yes. Everybody is just like our thumbprints. Yes, everybody is unique and we've been told that there are 4-5 brackets. At least traditionally मैं जहाँ से आता हूँ बिहार में, तो हमको यही बताया गया था कि पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या IPS करो। Correct. तो of millions of people who are being born, you are already being segregated. These are the 3 options, and then you are trained to fit into one of these 3 roles. Yes. And in this training to fit into this role, it is not always pleasant. There's a lot of pressure, stress, and you lose touch with that potential that we had. Correct. Is suppressed. Yeah. Deep down, and I don't think so it's healthy. And so वो एक reason है that, and I've also been realizing कि if we are always chasing milestones, yeah, that will only bring us momentary happiness on reaching that, and then I will be already looking for what is the next milestone. I did very well in my 10th. I was a relatively good student, and then I struggled very hard. And now I need to do 12. So I was always hitting the milestone, but I think I didn't enjoy the journey. It was a lot of struggle. It was a lot of stress and pressure on myself, by myself, and also expectation. Of course. So ये था what I was kind of living, and that kind of did not have any purpose in the sense that it did not feel right. And on taking the risk, one of the things I realized is, and which is the question I asked, and I went through some processes, and is कि what is it that I really want? And this was a very important question, and I needed to identify, और ये सही में खुद से पूछना था कि ये मैं अभी तक पूरे जिंदगी नहीं किया हूँ, अब मुझे कुछ करना है, and I am the only one who can answer that question. What is it that I want? And everybody wants everything, and that's great. But truly, what is it that I want the most? To prioritize करके, and one of the things is I want a certain way of living. It will come at the expense that I may have to put some other priorities on the, not बंद नहीं करना है वो avenues life में, but priority में क्या है? For me, it was a way of living, lifestyle, peace of mind, and doing some things where I can be of service, because I realized कि ये जो transition है, that risk that I took made a huge impact. Yeah. From how I was thinking, how I was feeling, how I was living, to what I'm doing now. I feel there is some meaning for myself, and then I said, कुछ, let me make this a way of living. So, and I am kind of उस journey पे अभी लगे हुए हैं. So I feel good about it. I don't know ये journey कहाँ, मतलब it's not having identified the purpose completely, but it's in the right path. So tell me about breathwork. Like what exactly
is it that you're trying to do in breathwork? I experienced it, but somebody who's watching for the first time, तो उसको इसके बारे में क्या बता सकते हो? और ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम कर रहे हैं, बट इट्स हैपनिंग विदाउट थिंकिंग. ब्रेन को सोचना नहीं पड़ता ब्रीथ करने के लिए, करेक्ट? इट्स अ फंक्शन. जैसे मैं बोलूंगा कि मैंने पैरों में जूते नहीं पहने, तो मेरा ध्यान जाएगा जमीन के ऊपर, या मेरा ध्यान उस जगह पे जाएगा. अदरवाइज इट्स अ फंक्शन. और अगर मैंने शूज पहने, तो मैं रनिंग के लिए जाने वाला हूँ या शूज पहन के बैठा हूँ, तो जैसे ही मैं उसके बारे में बात करूंगा तो आपका ध्यान आपके जूतों पे जाएगा. अदरवाइज यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, बिकॉज ब्रेन डजंट नीड टू थिंक अबाउट इट. इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. सो ब्रेथ वर्क क्या रियलाइज कराता है लोगों को, और क्यों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. So let me answer your question in two parts. Yeah. Why using the breath is integral in what I'm doing, and how does breath is used, why I use breath, and what is it that is possible. Breath itself अपने जिंदगी का background music है. From the time we are born till the time we die, कमी हो रही है. we are breathing. That's the only thing. The day we stop dying, have you कभी सुना है किसी ने कि मैं थक गया हूँ जिंदगी से, मुझे सांस, I want to kill myself, I want to commit suicide, and they Yeah. Oh, breath is so strong. It is the most primordial survival mechanism in our system. So it's very powerful. Yes. एक एग्जांपल देता हूँ. Have you ever noticed जब कोई गुस्से में होता है और are being chased by a tiger, या डर हो, पैनिक हो और स्ट्रेस्ड हो, तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता होगा? तेज हो जाता है थोड़ा. या और कभी कोई बहुत पीसफुल हो और तब उनका ब्रीदिंग कैसा होता है? हाँ, टू द पॉइंट कि यू डोंट इवन नो योर ब्रीदिंग. सो एक वो अंडरस्टैंडिंग से अगर ब्रेथ को देखें कि इफ यू आर बॉर्न विथ से 100 ब्रेथ्स, और बोलते हैं इट्स लाइक मनी एंड यू कैन स्पेंड इट, यू आर गिवन दिस बॉडी एंड यू आर गिवन 100 breaths टू लिव योर लाइफ, तो कैसे खर्च करोगे? क्या आप चाहोगे कि वो जल्दी जल्दी खत्म करके एग्जॉस्ट कर ले, या आराम आराम से? सो द वे यू आर लिविंग and the way you feel, emotions. So breath, सांस और emotions का direct एक link होता है. How you feel is how you breathe. So now that you know this, we can change the way we feel, having a idea of how am I breathing. कभी कभी कोई भी पैनिक सिचुएशन में it's very easy to get carried away. बहुत आसान होता है कि कुछ फोन आया बैंक से कि आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया या आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ. मतलब दिन में इतने सारे सिचुएशंस होते हैं कि कभी भी कुछ स्टिमुलस आए, आपका स्ट्रेस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड वो ऑन हो जाएगा, and you're in a state of panic, and it secretes even chemicals in your body like adrenaline and cortisol, which is basically running poison into the system. So we don't need that. और जब तक we don't have the capacity to understand this, we don't really know how to use it. It gets very easy to be sucked into that feeling and it stays with us. But कभी ना कभी if you just say, बोलते ना, एक सांस ले लो. So if you actually just say कि okay, and you, because the situation will not change. वो information जो अभी मुझे आया वो 10 मिनट बाद आता या पहले आता, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो अभी इंस्टेंट है. उसका सोल्यूशन भी हमको ग्रेजुअली ही निकालना होगा. एट दैट मोमेंट आई फील दैट द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड फॉर मी, एंड एट दैट मोमेंट फॉर मी टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड, जस्ट कनेक्टिंग टू द ब्रेथ एंड से ओके. And then once the panic subsides, then you can act. So in that sense, this is just an example of many, many things why breath is so beautiful and powerful. Using this very beautiful, powerful, and if not the most powerful tool in our life to understand deeper consciousness, to break strong patterns, habits, which we are born with, which we have accumulated all this conditioning का बात किया, हमें सिखाया गया है कि ऐसे ही जीना चाहिए, ये माइलस्टोन अचीव करोगे, एंड वी बिकम हैबिचुएटेड. हमको अभी पता भी नहीं है कि हम हाउ हैव वी बिकम लाइक द वे वी हैव बिकम टुडे. वी हैव नो आइडिया, बट वी आर. और हमको समय भी नहीं मिलता है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अरे हम बन तो गए लेकिन कैसे बने, कुछ मौका भी नहीं मिलता. तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रीदिंग style, we give ourselves access or a possibility कि हम go and connect to a deeper sense. क्योंकि हमको लगता है कि हम जो सोचते हैं वही है, what we think we are, but the thinking mind is just the tip of the iceberg. It's some 1 to 5% of the conscious mind. Yes. But the mind is bigger. Yeah. There's a whole data bank, your memory system, जो हर चीज स्टोर करता है from the time I'm born till today, past lifetimes. तो हर चीज का एक सोर्स है. तो to be able to go there and bring
इंफॉर्मेशन, मेमोरी, इमोशन अप टू द सरफेस, और उसको एक बार फिर से देखें फ्रॉम अ बर्ड आइज पर्सपेक्टिव और सोचे कि क्या ये मेरे लिए अभी सही है कि नहीं. आई एम लिविंग लाइफ इन ऑटो पायलट मोड, बट इफ आई गेट अ चांस जस्ट टू पॉज एंड टू सी कि इज इट इवन वर्थवाइल दैट दीज पैटर्न्स. हर चीज को हमको डिलीट नहीं करना होता अपने. बहुत सारे चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज नीडेड. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, अगर हमको एक टाइगर दिखे और हम भागे नहीं, दैट फियर इज ऑफ यूज, बट आई डू नॉट वांट टू ड्रॉप माय एंटायर फियर मैकेनिज्म, बट टू बी फियरफुल ऑफ एवरी लिटिल थिंग. कि मैं 6 साल का था, मैं चल रहा था, पीछे से आके दोस्त ने टपली मार दिया, और उसके बाद से हमेशा लगता है कि जब भी चलूंगा तो पीछे देखते रहता हूँ कि कोई मारने तो नहीं आ रहा. और ये चीज सबकॉन्शियसली स्टोर हो जाता है और एक पैटर्न, डर, हर चीज का एक डर बन जाता है. तो क्या मुझे ये राइट नहीं है कि मैं एक बार जाऊं, और 6 साल का मैं अब 30 साल का हो गया, लेकिन वो अभी भी एक डर है. एंड आई फॉरगॉटन द स्टोरी कि मेरे दोस्त ने आके मारा था, बट एक हमेशा 2-3 बार ऐसे हुआ, और अब मेरा एक पैटर्न बन के मैं पीछे देख के देखूं. तो समटाइम्स आई फॉरगेट द स्टोरी, बट द मेमोरी ऑफ इट इज देयर, और एक द इमोशन इज देयर. सो इमोशन इज वेयर वी आर एक्सेस. सो टू गो बैक, मे बी दैट इमोशन और द सिचुएशन कैन रीसर्फेस, और मैं वापस से वो सिचुएशन पे देखूं और बोलूं कि यार क्या ये डज इट सर्व मी एनी मोर. उस समय किसी कारण से करा मजाक में, बट अब I don't need to live with that fear of always looking back. So it is just that we use this breathing technique to go into our deeper mechanism, or deeper consciousness, and release trauma, undo our limiting beliefs, some patterns that don't serve us. But also, it's a very powerful tool where you can actually use your mind and using your breath to make things manifest in your life. So this is briefly a glimpse of what I can explain the work to you. ह्यूमन बॉडी को समझना ना इतना जरूरी है. जैसे मैं बहुत डम साउंड करूंगा ये बोलते हुए, बट मैं पता है ब्लड का फंक्शन भूल गया था. हमने स्कूल में पढ़ा था, बट ब्लड का सिंपल फंक्शन होता है कि वो बॉडी के अंदर खाना पहुंचाता है और वेस्ट निकाल के लाता है हमारे सेल. डिड नॉट नो दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड हर ऑर्गन का क्या फंक्शन है वो भी हमें साइंस में पढ़ाया गया था बचपन में, बट मैं भूल चुका था. बट जब मैंने अपनी वर्कआउट करना शुरू करा और मैंने देखा कि मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है उससे, कि मैं गधे की तरह 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ बट मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर मैंने खाने को समझा थोड़ा कि 70% इज डाइट, 20% इज योर वर्कआउट, 10% इज योर स्लीप. दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन, राइट. अब उस खाने के अंदर क्या आप खा रहे हो और वो खाना कहाँ जाकर आपकी बॉडी में स्टोर होता है, उसको कैसे आप एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करते हो, उसमें ब्लड का क्या रोल है, उसमें कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का क्या रोल है, ये सब चीजें मैंने समझी. एंड ऑफ कोर्स ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है विच इज कांस्टेंट, राइट. हर चीज के अंदर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको बताया जाता है कि इस तरह से ब्रीथ करो ताकि आपकी एनर्जी कंजम्पशन, ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, ये एक पैटर्न में हो. बॉक्सिंग में जब एक टेक्निक होती है तो ब्रीदिंग की वो एक टेक्निक होती है. जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो जब आपकी मशीन, जैसे आप पुश डे कर रहे हो, राइट, तो ऊपर जाते हुए सांस बाहर निकलता है और नीचे आते हुए सांस अंदर जाता है. तो ये सब टेक्निक्स हैं और टेक्निक सब ब्रेथ के अराउंड फोकस्ड है. तो हमारी एनर्जी को एक्सेस करने का एक तरीका भी ब्रेथ ही हुआ, और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें ब्रेथ चाहिए क्योंकि वही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तो ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है बट हम इसको भूल जाते हैं, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, इन अ डेली लाइफ. फॉर समवन हु इज वाचिंग, अब वो घर पर है तो कुछ ऐसी टेक्निक, जैसे आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट फ्रॉम डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन. ही इज अ स्टैनफोर्ड बेस्ड साइंटिस्ट हु रन्स हिज लैब, एंड यूट्यूब पे उनका एक चैनल है ह्यूबरमैन लैब. तो मुझे बहुत सारी चीजें न्यूरो साइंस बेस्ड उनसे सीखने को मिली. जैसे एक टेक्निक वो ब्रेथ की बताते हैं कि टू रिलीज स्ट्रेस, इमीडिएटली आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है. और जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा मतलब थकान ना हो, उसके लिए भी एक टेक्निक है. वो बोलते हैं कि 2 बार सांस अंदर लेनी है एंड देन यू एक्सहेल. So this actually helped me. A very simple tool. But he told us and it just helped. So what do you, somebody is listening to this, तो उसको एक ऐसी टेक्निक जो वो रोज अपनी जिंदगी में यूज कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेस कम करना हो, एंजाइटी को कम करना हो, वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना अगर आप तक एक्सेस नहीं है तो वो कैसे उस तक पहुंच सकता है घर पे बैठे हुए. अगर योगिक ट्रेडिशन से देखें, सो आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 layers. द मोस्ट ग्रॉसेस्ट level is the body, the physical body. Then there is the energetic body, the mental body, the intellectual body, and then the bliss body. तो ये 5 layers होते हैं. तो हम लोग usually don't even work with our physical body and don't even understand how it works. Correct. And a body is like a tool, instrument. Like अगर आप कोई phone भी लेते हो तो you read the user manual and there's a whole lot of information of how to operate it, but we don't really know, so we don't pay attention on what the power of what all it can use. Similarly with our body, there is so much we don't pay attention on.
But अगर ध्यान में दें, it's the most complex, most advanced tool ever made. Yes. So to spend some time to know the body, and then the next two layers, the mental and emotional body, is actually directly related to the breath. To be able to reach the last layer, which is the bliss, ananda, koshamaya, which is what we want to be. Our true self is to be happy. Everybody's ultimate goal is want to be happy and peaceful. So अगर हमको वहाँ जाना है, तब तक ये दो तीन चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो वो तो दूर का बात रहेगा. Now, like you said, breathing as a practice, traditional pranayam or kriya yoga, breath related mindfulness practices, there are so many tools that you can explore to actually work and understand your breath and to use it in our day-to-day life. And there is millions of such things, but now you can recommend one form of breathing which everybody can use, and it's a very common, effective, and almost everybody can use it. It's not a very active breathing format, but it works both ways. अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, it energizes you, or if you're feeling stressed, it calms you. So it works at two planes, both energizing and calming. So if you feel you are stressed or if you feel you're low on energy, you sit in a nice, comfortable seated position with your spine straight. Yeah. अगर किसी को दिक्कत है तो they can even take a back rest, but just sit and you do box breathing, which is inhaling, holding the breath, exhaling, and holding the breath. So there are four parts in a breath, if you know. No, I don't know about this. So everybody thinks there's an I thought there were only two. Inhale, Yes. exhale. So usually there are four parts of breath. So there's an inhalation and then there's a pause when we immediately do not exhale. So we don't realize we're actually breathing. There'll be this moment of stillness in between the inhale and exhale. It is called the pause in fullness of breath. And there is, when we exhale, there's again another pause, and that is called the pause in emptiness of breath, because that dark cavity has released all the air from our system. So there is a pause then. In yogic terms, it has certain names, kumbhaka. I don't want to get into the technicality, names don't matter, the practice does. So we are going to do these four parts of breath in equal ratio. So ideally, we will try and breathe. For example, we are going to do 4 counts of inhale, 4 counts of holding the breath in fullness of breath, 4 counts of exhale, and then we hold our breath for 4 times in emptiness of breath. And we form this rhythm of box breathing. And even if we do it for 10, 15, 20 minutes when we have the time, it's a very effective practice. You can try it, and I'll give you a demonstration of how it would look like. So if you just sit with your spine straight, you can just observe one round and then we can do a few minutes of it together. So usually it is inhalation, 1, 2, 3, 4, holding for 1, 2, 3, 4, exhaling for 1, 2, 3, 4, and holding for 1, 2, 3, 4. So I will just, if you can observe me with my fingers and follow me while I do it. We do it together, the breathing. Sync? Yeah, absolutely. Would you want to try it? Yeah. I'll keep the count. Yeah. Close your eyes. Keep your spine straight. Shoulders relax. Face relax. And inhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. And usually, I would recommend that जब भी ये करें, even if you do for about 5 minutes, 10 minutes, depending on the time you have, जब करें तो after you finish the controlled breathing for a few rounds, for those 5-10 minutes, sit in silence for at least couple of minutes, because there is a movement of energy, so you would have felt something even in this few rounds. When I opened my eyes, it felt there was such a calm. Yes, so even in this few breaths, you will feel a sense of calm, but also there is a movement and generation of energy, and you are able
to sink into a little more deeper state of meditativeness, and sometimes we want a little break for this mind. So jab bhi kare, do about 5, 10, 15, 20 minutes and then sit for 5 minutes in silence. And it's a very simple but effective and beautiful practice. So if yeah, I would recommend you can try this. So अंकुर से एक exciting question है मेरा, comparison of life from what it was before to what it is now. A day in your life today, how does it look like? Tell somebody, how do you make a living from? Of course, there's a huge difference from what you were doing before. सुबह से शाम की भाग दौड़ थी और अब इतना काम है, पीस है, ऐसा मुझे लग रहा है शायद बाहर से, बट यू विल बी एबल टू टेल बेटर. तो वो क्या फर्क है, एंड व्हाट डज अ डे लुक लाइक इन योर लाइफ? I don't know how to differentiate that in this, but एक चीज that I've realized और जो महसूस करता हूँ कि I have a lot more time. जब मैं काम करता था तो मुझे लगता था मेरे पास टाइम ही नहीं है और बस काम कर रहा हूँ सुबह से रात तक, एंड बैक सोना, काम करना, और किसी और चीज पे ध्यान देने का या एक्सपीरियंस करने के लिए कोई टाइम नहीं था. नाउ आई फील आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू all the things that I need to give time to. So I have enough time in a day for myself, enough time to dedicate to work, enough time to go enjoy the things. So if I spend a lot of time in places where there's a lot of nature. So my usual time here, I get up earlier. I would set alarm at 7 in the morning or 6 in the morning to go to office, and that was a struggle. And now I wake up on my own and I feel fresh, and I spend the first few hours of the day with my practice or whatever. If I'm on the beach, I go for a run, swim, do my meditation, or if I do my yoga, breathing. So there's a lot more practices, but spending that time to be with myself in the morning sets the tempo for the rest of the day, and the rest of the day is usually flowing between work. One of the important parts of life is to celebrate every day. So I like to make the most of every day whenever I get the chance, and I'm thankfully staying in places these days where I spend my summers in the mountains and winter on the beaches, so I get to see beautiful sunsets everywhere. It's a lot of change, but I feel like I am doing more. I am dedicating more time, even if I have to narrow it down to work. The meaning and the quality of work and the satisfaction of the work is much more. I feel I'm receiving much more, both in terms of I feel I'm more secure financially, emotionally, mentally now, despite having a well-paying job in the city when I never felt anything is enough. So yeah, and it's also my requirements are way less. But so this is the only difference, or all the difference. Yes. So I think one very valid point that अंकुर just brought up ना, कि टाइम, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है. टाइम सबके पास होता है, और आप अगर अपना समय निकालना चाहो ना, तो आप किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हो. क्योंकि हम शाम को वीकेंड पे दोस्तों के साथ जाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं. फ्राइडे नाइट हमारी इंपॉर्टेंट होती है, सैटरडे नाइट इंपॉर्टेंट होती है, संडे को सोना इंपॉर्टेंट होता है. पर जब खुद के लिए समय निकालने की बात आती है ना, तो हमें लगता है टाइम नहीं है मेरे पास. तो ये इतना जरूरी है टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, एंड यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ. इफ यू कैन नॉट सिट विद योर ओन सेल्फ फॉर 10 मिनट्स 30 मिनट्स एवरी डे, आप लाइफ में कहीं ना कहीं भाग रहे हो कुछ ना कुछ चीजों से. अपने आप अगर आप समय नहीं बिता सकते ना अपना, तो कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में. या तो मैं जज नहीं कर रहा ना, मैं किसी को जज करने के लायक हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. और अगर मैं किसी तक ये मैसेज पहुंचा पा रहा हूँ, तो आई थिंक इट कुड बी अ ह्यूज डिफरेंस टू दैट पर्सन्स लाइफ. सिट विद योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, मेडिटेट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, डजंट टेक अ लॉट. और सुबह थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठ जाओ, अपने लिए निकालो, बट वो समय, उसके बाद तो हम दुनिया की भाग दौड़ में वैसे ही लग जाते हैं. तो अगर आप वो 10-15 मिनट अपने लिए निकालोगे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुश हो सकती है और बहुत ज्यादा अच्छे से निकल सकती है. तो रिसेंटली आई क्विट माई कॉर्पोरेट जॉब ऑल्सो. आई was work last job was as a vice president at DTP Mudra, लाइव इवेंट्स और स्पोर्ट्स हैंडल कर रहा था. तो फिर आया कोरोना और हमारा काम हो गया बंद. तो तब मैंने अपने आप को इतना बोर कर लिया ना, नेटफ्लिक्स देख देख के और खाना खा खा के 20 किलो वेट बढ़ा लिया. एंड देन फाइनली माय वाइफ वन डे जस्ट किक मी इन माय बट एंड शी लाइक, गेट आउट ऑफ दिस सोफा एंड थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट. तो अब क्योंकि मैं इतना बोर हो चुका था, देन आई हिट दैट पॉइंट. वो जो 10 साल मैंने काम किया, वो खाली होते होते मुझे 2 महीने लगे. फिर आई रीच्ड अ पॉइंट कि अच्छा, अब नेक्स्ट के बारे में मेरे पास जगह है, मेंटली आई हैव मोर स्पेस टू थिंक अबाउट वर्क. तब मुझे आइडिया आया एनवायरमेंटली का, राइट. और एक मैंने 3 चीजें नोटिस करी थी. एक तो क्लटर बहुत हो गया हमारी जिंदगी में, इतने प्रोडक्ट्स भर लिए हैं ना हमने. वही नीड नहीं है हमको, वांट है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, व्हाट वी नीड वर्सेस व्हाट वी वांट. एंड वांट्स आर क्रिएटेड बाय द ब्रांड, राइट. ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें फंसते हैं. इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, एक सामने एक रील दिखती है, उसके हम परचेज का बटन होता है, गए खरीद लिया.
जरूरत नहीं थी हमको उसकी। मतलब एक बंदा कुछ भी खरीद लेता है दिन के अंदर जाके आजकल। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई कि आपकी जरूरत क्या है। तो वही मैंने समझा कि पर्सनल केयर तो बहुत सिंपल सी चीज है, शुरू होती है आपके दिमाग से, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। उसके बाद ये दाढ़ी, बाल, शैम्पू नहीं भी लगाते ना हम एक हफ्ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दाढ़ी के अंदर अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल ग्रोथ है। यही मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ अपने ब्रांड के थ्रू कि सब चीजें अपने आप होती हैं, बट जस्ट हैव लेस प्रोडक्ट्स इन योर लाइफ, लेस थिंग्स टू वरी अबाउट योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद देम, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, spend time in nature, spend time with yourself. Don't think too much about how's my hair looking, how's my beard looking. Do it when you're going for a meeting. Worry about it. Look sharp. No doubt about it. You have to look sharp. Be on top of your game. But when you are at home alone, when you're on a weekend, अपनी वाइफ के साथ चिल कर रहे हो, बच्चों के साथ चिल कर रहे हो, फैमिली के साथ चिल कर रहे हो, तो वहाँ फोकस रखो। और पर्सनल केयर को बहुत सिंपल बनाओ। स्टार्ट विद द 10 minute meditation in the morning में भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं सबको यही बोलता हूँ। 30 minutes to 45 minutes of a workout, anything, run, jog, gym, anything that you want. And then comes your personal care routine, which is caring about your skin, your hair, your beard, क्योंकि ये हमें एक ही बार मिलता है जिंदगी में। और जब ये चला गया ना, जब स्किन के ऊपर झुर्रियां आने लगती हैं, रिंकल्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए क्योंकि स्लीप प्रॉपर नहीं है, और फिर हम देखते हैं एंटी डार्कनेस क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम। अरे भाई, अगर आप रोज ध्यान रखोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना इन सब चीजों की। और बियर्ड और बाल, ये तो नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि हम इनके ऊपर इतने प्रोडक्ट्स लगा लगा के, केमिकल्स लगा लगा के इनको इतना खराब कर देते हैं, तो ये ऑब्वियसली उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं हमारे ऊपर और खाने पे फोकस नहीं करते। डाइट्स हैव बिकम सो पुअर ब्रो इन द पास्ट, राइट? वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इम्प्रूव, वर्क ऑन दोज थिंग्स। सो एनवायरमेंटली यही सोच करके शुरू करा मैंने। एंड द मैसेज इज वेरी सिंपल, लाइक हाउ अंकुर्स मैसेज इज वेरी सिंपल, फोकस इन योर ब्रेथ एंड इट विल लीड यू टू अ पाथ, राइट? एंड माय मैसेज इज आल्सो वेरी सिंपल। पर्सनल केयर बहुत सिंपल सी चीज है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अपनी लाइफ को क्लटर फ्री रखो। कम चीजों के साथ ज्यादा काम होगा ना, तो लाइफ इज गोइंग टू बी मच बेटर, मच सिंपलर। तो अंकुर से मेरा आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अंकुर, where can people find you and how can they connect with you if they have to? How can one reach out for you to attend a class maybe? What's your schedule like? Tell about that. Yeah, before I tell my schedule and more information about me, I want to thank you for the work that you're doing. It's a very conscious choice that you have made, and it takes a lot of courage to take the risk. Like you asked me how I took the risk. It takes a lot of courage to take the risk of leaving something which felt secure and start something meaningful. So I'm very happy, and I wish Environmentally all the success it deserves, because the intention behind it is pure and comes from a good place. Like we have been talking कि अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने breath का, and even this is a part of we are given this entire gadget. So taking care in a conscious way, but at the same time being a minimalist, both in the mind and in what we use. The message is great, the product is great, and you are a great human being and a friend. So inshallah all will be amazing. About me, I travel a lot within the country itself, but I am very accessible. I'm very active on my Instagram handle, which is updated with all workshop, retreats, programs that me along with my colleagues or teachers or friends we organize. So if I am there on Instagram as am.i.ankur, I'll put a link in the description below. I.ankur, and that has all the information of all the programs, work that is available, and I will be offering in the coming days, months. So you're invited to come visit, explore the work. Yeah, and that's about it. I don't think so. It's the most updated that it can be. Yes. Is there anything else? No, I think we're good. I'll just do a conclusion. Yeah. Thank you. Thanks a lot, Ankur, for joining, brother. It was a pleasure. And thank you for sharing this. It's a very deep knowledge that you've shared with us. And simple है, but बहुत deep है. और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ change करना चाहते हो, तो पहले focus on yourself and give time to your own self, to your own breath. Focus on that. And this will eventually help you to be on top of your game. And if you want to make it, and the journey is what it is all about. Destination पे पहुंचने के बाद तो खत्म हो जाता है ना गेम. तो गेम खत्म हो गया, फिर आपको next destination चाहिए, फिर next destination. The small steps, the journey is more important than the destination. Yes. We enjoy the flow of life. Yeah. So it's all about the journey. Make a good routine for yourself. Be consistent with it. So your bad day is not gonna interfere in a day of your life because you're looking towards something bigger. तो वो routine के साथ चलता रहता है.
But anyways, बातें खत्म ही नहीं होंगी हमारी. There is so much to share, you know. I have also been enlightened myself. I've enlightened myself in the past few years. Ankur took a path before that only. So बहुत सारी बातें हैं, but you know, we'll maybe do a part 2 of it if you guys want. Tell us in the comment section below. I'll see you guys soon. Thank you, Ankur, and I'll put a link in description below for Ankur where you can find him and attend his next session. Please try it out. It is life changing. I assure you of that. समय निकालो. Thank you. Bye.